मैं यही कहूंगा कि अमन से जो मामला तय होंगे वो इस तरह की जो ढीठ किस्म के बयानात हैं उससे नहीं होंगे। तो अमन की बात करें, मोहब्बत की बात करें, क्योंकि यही चीज है। अगर दुनिया चलती है तो अमन मोहब्बत के साथ चलती है। हरमीत, आपसे लास्ट सवाल है कि जितने हमारे देखने वाले हैं भारत में और स्पेशली भारत के सिखों के लिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं सब इंडियंस जितने भी हैं, चाहे वो जिस धर्म से उनका ताल्लुक है, मैं उनको यही कहूंगा कि देखिए ये पॉलिटिक्स चलती रहेगी, ये जो मीडिया वार है ये चलती रहेगी, लेकिन सच तो ये है कि हम आपसे मोहब्बत करते हैं, आप हमसे करते हैं, इसमें भी कोई ढकी छुपी बात नहीं है। तो कोशिश कीजिएगा कि जब एक पॉजिटिव लीडर आता है तो पॉजिटिव लीडर को चुने। हम भी, हमारी भी कोशिश होगी, आपकी भी होगी, ताकि ये मेल मिलाप का जो सिस्टम है, ये बाब जो है ये दोबारा खुले। और मोहब्बत ही एक भाषा है जो दिल तक रास्ता पहुंचाने के लिए एक ही रास्ता है, वो है अमन, मोहब्बत और प्यार से बात करना। तो बहुत हो गया, ये लड़ाई झगड़े बहुत हो गए, बॉर्डर बहुत बंद हो गए, अब खुलने की बात है, अब दिल लगाने और बाएं जो खोलने की बात है। तो मैं उनसे यही कहूंगा कि आए, हमारे यहाँ तो मोहब्बत है ही है। हमने तो आपके लिए कॉरिडोर खोला है, सिखों के लिए कटास राज है हमारे पास, बहुत ही मल्टी कल्चर है यहाँ का। और हम भी आएंगे, हमारे जो मुसलमान भाई है वो अजमेर शरीफ जाएंगे, हम अमृतसर जाएंगे। तो मैं उनको यही कहूंगा कि बहुत हो गया, नफरतों की भाषा बहुत हो गई, आए और एक नए बाब की बुनियाद रखते हैं और वो है अमन। இளைஞர்கள் காந்திய சிந்தனைகளில் எவற்றை சிக்கன பிடித்துக் கொள்ள வேண்டும்? காந்தி என்பது அன்பு பொதுவான சிந்தனை தான். ஆனால் காந்தியம் என்று சொன்னது போல முதலில் இந்த நாட்டில் இன்றியமையா தேவை, ஒவ்வொரு காலத்துக்கும் ஒரு வகையான தேவை இருக்கும். சவர்கார் தோன்றியிருக்காவிட்டால் ஜின்னா தோன்றியிருக்க மாட்டார். ஜின்னா நம்முடைய காந்தியை போல லண்டனில் தாதாபாய் நவ்ரோஜினுடைய சீடராக இருந்தவர் தான். ரொம்ப செக்யூலர் மைண்டட் பர்சன். அதனாலே அவர் தோன்றி இருக்காவிட்டால் இவர் தோன்றி இருக்க மாட்டார். ஆகவே பெரும்பான்மையானவர்கள் ஒன்று திரண்டு ஆதிக்கம் செலுத்த நினைக்கிறார்கள், மெஜாரிட்டேரியன் ரூல் என்று சிங்களீஸ் போல. அந்த எப்படி சிங்கள வெறியர்கள் சிறுபான்மை மக்களை நடத்துகிறார்களோ அதே போல இந்து வெறியர்கள் நடத்துவார்கள் என்ற அச்சம் காரணமாக அவர்கள் தனிநாடு கோரினார்கள். அது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும். ஒரு அத்வானி பாகிஸ்தானுக்கு போறார். பாகிஸ்தானுக்கு போய் ஜின்னாவினுடைய கல்லறையில் உட்கார்ந்து கொண்டு அவர் ஒரு செக்யூலர் மைண்டட் பர்சன் என்று அந்த குறிப்பில் எழுதுறாரு. அவர் சமய சார்பற்றவர். உண்மையிலேயே சமய சார்பற்ற ஒரு மனிதர் சமயம் சார்ந்த நாட்டை உண்டாக்கியது என்பது வேறு. ஆனால் அவர் சமயம் சார்ந்தவர் அல்லர் என்று எழுதிவிட்டு வந்தார் என்பதற்காக அவ்வளவு பெரிய நிலையிலிருந்து, அந்த தலைமையிலிருந்து அவர் கீழே இறக்கப்பட்டார். கீழே இறக்கப்பட்டு அப்படி ஒரு கருத்தை நீ எப்படி சொல்லலாம் என்று சொல்லி அவரை கீழே இறக்கி, அதற்கு பிறகு அவர் இன்றைக்கு ஒன்றும் இல்லாமல் ஆக்கப்பட்டிருப்பதற்கு மிகப்பெரிய காரணம், கத்தி இல்லாமல், ரத்தம் இல்லாமல், யுத்தம் இல்லாமல் ஒரு தலைவரை சாதாரணமாக இறக்குவது என்பது இந்திய வரலாற்றில் நான் அறிந்த வரையிலும் அத்வானியை தவிர வேறு யாரும் அப்படி இறக்கப்பட்டதில்லை. அடுத்த முகம் ஒன்று RSS முகம் தூக்கி வைக்கப்பட்டிருக்கிறது என்று சொன்னால் மீண்டும் அந்த இந்துத்துவம் ஒரு வேகம் கொள்ளுகின்ற நிலை என்று எனக்கு படுகிறது. இது காந்திய சிந்தனைக்கு மாறானது. ஆகவே அந்த செக்யூலர் மைண்டட் இந்தியா என்பதுதான் காந்தியினுடைய அடிப்படை. நன்றி. இளைஞர்கள் பார்த்துக் கொண்டு Hi guys, this is Manu Mishra. So today we discuss about the Place for Worship Act 1991. Reason being क्योंकि अभी एक पर्सन ने पिटिशन फाइल करी सुप्रीम कोर्ट में और बोला कि इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दो. रीजन भी क्योंकि बहुत सारे इन्वेडर्स आए थे, मुस्लिम इन्वेडर्स थे, फिर उसके बाद ब्रिटिशर्स आए और हमारे रिलीजियस मॉन्यूमेंट्स को उन्होंने तोड़कर वहां पर अपने रिलीजियस मॉन्यूमेंट्स बना दिया. द प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 सेज कि उन्होंने एक लाइन डिमार्केट करके रखी है 15 अगस्त 1947 कि 15 अगस्त 1947 को इंडिया में जितने भी रिलीजियस मॉन्यूमेंट्स है वो वैसे के वैसे ही रहेंगे. पहले 15 अगस्त के पहले जो हुआ कोई मतलब नहीं है उसका. But there are certain exceptions. There are two exceptions basically. The first exception is Babri Masjid and Ram Janmabhoomi disputed land, and the second exception is the religious monuments or the monuments which are listed under the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act 1958.
और मैं मुख्यमंत्री से अपील करता हूं कि वह आएं और अपनी बातें आपके सामने रखें। मुख्यमंत्री जी, मैं इस मंच के माध्यम से पुनः श्री अडवाणी जी से अपील करना चाहता हूं, अपनी यात्रा को स्थगित कर दें, स्थगित करके वो दिल्ली वापस चले जाएं। देश हित में अगर इंसान ही नहीं रहेगा, इंसान नहीं रहेगा तो मंदिर में घंटी कौन बजाएगा या कौन बजाएगा? जब इंसानियत पर खतरा हो, इंसान नहीं रहेगा तो मस्जिद में इबादत कौन देने जाएगा? 24 घंटा में निगाह रखा हूं। हमने अपने शासन के अपने तरफ से पूरा उनकी सुरक्षा का भी व्यवस्था किया, लेकिन दूसरे तरफ हमारे सामने सवाल है, अगर एक नेता और एक प्रधानमंत्री का जितना जान का कीमत है उतना आम इंसान का जान का भी कीमत है। हम अपने राज्य में मतलब दंगा फसाद को फैलने नहीं देंगे। जहां फैलाने का नाम लिया और जहां बवेला खड़ा करने का नाम लिया तो फिर हमारे साथ चाहे राज रहे या राज चला जाए, हम इस पर कोई समझौता करने वाले नहीं हैं। लोग कहते हैं कि आप अदालत का फैसला क्यों नहीं मानते? अदालत क्या इस बात का फैसला करेगी कि यहां पर राम का जन्म हुआ था कि नहीं हुआ था? आपसे तो इतनी आशा है, बीच में मत पड़ो, रास्ते में मत आओ, क्योंकि ये जो रथ है लोक रथ है, जनता का रथ है, जो सोमनाथ से चला है और जिसने मन में संकल्प किया हुआ है कि 30 अक्टूबर को वहां पर पहुंच करके कार सेवा करेंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे, उसको कौन रोकेगा? कौन सी सरकार रोकने वाली है? Good evening. The headlines. I say Muhammad Amir and his convert story which leaves the world in shock. He was among those who demolished one of the historic mosques called Babri Masjid, but later with the guidance of Allah, he ended up accepting Islam as a result. He took an pledge to build and protect 100 mosques. Unfortunately, a few days back, Muhammad Amir passed away, but he has left an incredible message to the humanity through his life journey to Islam. To know more, let's begin the story of Muhammad Amir, who was once Balbir Singh. He was born in Hindu Rajput upper caste family in a small village near Panipat. At the age of 22, Balbir Singh and his best friend Yogendra Pal Singh, the most Hindu extremists, were so filled with hatred for Muslims that on 6th December 1992, they went on to demolish Babri Masjid. He was the first person to reach on the top of the central dome, brandishing a hammer in his hand. Struck the very first blow with his pickaxe into the central dome of Babri Masjid. It was such an heroic moment for him and his friends. Balbir was hailed as a hero when he took back the brick from the destroyed masjid to his village. But his happiness didn't stay longer. As soon as Balbir approached his father with his newfound fame and his role in the destruction of masjid, he was not well received. I told all this to my father, who became very angry. He was heartbroken and told me straight that he would not live with me because of my shameful conduct. He asked me to leave the house because he could not tolerate a person who pulled down the house of God. He also told me never to return home during his lifetime. I tried to tell him about my popularity and my active part in the destruction of the mosque, but he did not pay any heed and started leaving the house himself. But I stopped him and I told that instead I would leave this house as I could not live with an anti-Ram Bhagwat person. One day, Yogendra Pal, who was best friend of Balbir Singh, took out some bricks of Babri Masjid and invited Hindus to come and urinate on them. A big crowd assembled there and urinated on them. This time, Allah showed no mercy. After 4 or 5 days, Yogendra became mentally ill. He became mad and always remained naked.
He was the only son of the respectable landlord. He used to tear away the dresses of his mother and wanted to misbehave with her sexually. Noticed by this, Yogendra's father became very worried and took him to many pundits and spell charmers. He prayed to God for forgiveness and distributed alms, but nothing worked. One day, Yogendrapal tried to molest his mother, but the neighbor saved her and enchained him. His father Chaudhry was so furious that he wanted to kill him. Then somebody told him to contact Maulana, who used to come to madrasa in Sonipat. This is where the story gets its first twist. Yogendrapal's father approached the Imam of Bhavana Masjid and asked for a taviz for his son. The Imam declined to do so and instead arranged a meeting with Maulana Sahib of the madrasa. His father fell on his feet and narrated to Maulana the full story of destroying Babri Masjid. Maulana Sahib informed, those people who destroyed the sacred house of Lord had committed such a heinous crime that the entire world would have been destroyed by Almighty Allah. This man's suffering is nothing for such as ghastly crime, but to some extent, we, the Muslim, are also at fault as we fail to convey the teachings of Islam to the destroyers of Masjid. His father again fell on his feet and promised to follow his instructions and requested to cure his son. Maulana offered prayers and asked people to pray for Yogendra and his father. People coming out of Masjid were surprised to see that Yogendra had covered his private parts with his turban. Impressed by this, Chaudhry asked the Maulana to get him converted to Islam. When Chaudhry was about to go to Masjid, Yogendra said that he also wanted to become a Muslim. Both of them performed ablution and were named Muhammad Usman and Muhammad Umar. Meanwhile, Balbir's father died. He was grief-stricken at the destruction of Babri Masjid and with his son's participation in its destruction. Balbir's father would ask his wife, "Why hasn't the Lord given us birth in some Muslim family? Being Muslim, we could have been among the oppressed, not the oppressors." Balbir narrated, "He shown his anguish and despair to my mother and wished to be reborn among Muslims to bear such tyranny. He had strictly forbidden my presence at his funeral and asked to be buried like Muslims. My mother acted on his will and informed me after 8 days of his death. This made me very sad and heartbroken. I began to realize that the destruction of the masjid was an act of tyranny. Whenever I went to my mother, she used to weep and hold me responsible for the death of my noble father and condemned me. Then I stopped going home. Later, after 6 months, Muhammad Umar returned from Jamaat tour and told his story to Balbir. Balbir was filled with fear, disgust and amazement and was worried that he might also suffer the same fate as Yogendra. Muhammad Umar, who was once Yogendra, suggested to Balbir to meet with this Maulana at Sonipat. When they met, the Maulana said to Balbir, "The Lord of Lords can punish you with the same treatment as he did with the wrongdoer, Yogendra. Be sure if you do not get any punishment in this life, you are doomed to a horrible torment in the next world." What do you think what happened next? Alhamdulillah, on 25th June 1993, Balbir recited the Kalima after Lohar prayer. Maulana named him Muhammad Amir and asked him to stay for some time to learn Islamic literature and how to pray. After 3 months, his wife also embraced Islam. Balbir's mother was overjoyed to hear Balbir's journey to Islam and said that the soul of his dead father would be happy. She also became Muslim after some time. Muhammad Amir, along with Muhammad Umar, pledged to rehabilitate deserted masjids and build new ones to compensate for their ghastly act of destructions of Babri Masjid. We have decided to cooperate with each other. I would rehabilitate at least 100 deserted masjids
and Muhammad Umar would construct 100 new masjids during our lifetime. With this aim, he has built 91 mosques in these 26 years. Our target is to rehabilitate our deserted masjid and build one new masjid on